नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गुजरात अब बिहार बन गया है। विकास के नाम पर खोखले पुल बनाए जा रहे हैं। वलसाड जिले के पारडी तालुका के उमरसारी गांव में आज निर्माणाधीन पुल और अप्रोच वाला हिस्सा ढह गया, जिससे इस निर्माणाधीन पुल के प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब हर जिले में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात में विकास के पुल क्यों टूट रहे हैं। और ऐसी ही एक घटना वलसाड जिले के पारडी तालुका के उमरसारी गांव में भी हुई और 126 मीटर लंबा और 5.5 मीटर चौड़ा पुल बनाया जा रहा है, जिसका नाम अटल सेतु होगा। 9.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। पुल का पिलर और अप्रोच वाला हिस्सा धंस गया था। अब यह पुल निर्माण के अधीन है। जब यह पिलर और अप्रोच गिरा तब कोई भी ठेकेदार यहां मौजूद नहीं था और मानसून आने के कारण इस पुल का काम रोक दिया गया है। 2022 में पर्यटन सर्किट विकसित करने और क्षेत्र का विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा किया गया था और सरकार ने इस पुल के लिए 9.30 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीवी हिंदी न्यूज। અમે જે કહીએ કે રેતી નદીમાંથી જે રેતી ઉલેચીને એ લોકોએ જે ઉપર નાખી એના કારણે નદીનું વેણ એ લોકોએ ડાયવર્ઝન કર્યું હતું। ડાયવર્ઝનના કારણે એ ધોવાણ થયું રેતીનું નીચેથી ધોવાણ થયું એટલે એનો મતલબ એમ કે નીચે પિલર સ્ટ્રોંગ નહીં હશે, એના કારણે કદાચ એમાં ભ્રષ્ટાચાર હોઈ શકે। એ કારણે એનું પુલનું ધોવાણ થઈને એક બાજુ નમી પડ્યું છે। એ ટુરિઝમ માટે કનુભાઈ મંત્રીશ્રીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું ટુરિઝમ માટે કે ગામનો વિકાસ થાય, અહીંયા ટુરિઝમ આવે, દરિયા કિનારો સુંદર છે, એના સૌંદર્યમાં બી સારું, લોકોને હરવા ફરવાનું સારું, તિથલ બીચ કરતાં બી સારો છે અમારો બ્રિજ। અહીંયા દરિયા કિનારો બહુ સુંદર અને સ્વચ્છ છે, એના માટે અહીંયા ટુરિઝમ વિકસાવવા માટે કનુભાઈશ્રીએ અમને આ એક સારી ભેટ આપી છે। પણ હવે શું કારણ હોઈ શકે, કદાચ આ લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરીને એમાં કદાચ કંઈ આવું તેવું કંઈ થયું હશે, પણ બીજું કારણ તો કંઈ નહીં કહી શકીએ। પણ આ રેતીનું ધોવાણ, દરિયાનું જે એ લોકો જે રેતીનો આ જે ખાડીનો જે વેણ છે એને ડાયવર્ઝન કર્યો એના લીધે થઈ શક્યું। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.